Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. So, today we are going to start chapter number 2 of class 6, that is algorithm and flowchart. So, to cope with the problem, we need to make better plan which will be convenient and easy to solve that particular problem. हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमें उसे टैकल करना है, तो हमें उसके लिए एक बेटर प्लान चाहिए जो कि हमारी प्रॉब्लम बेटर प्लान से वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सके। और ये कौन सी प्रॉब्लम की बात करें? इट्स नॉट दैट वी कैन नॉट टैकल दैट प्रॉब्लम, but the thing is that we may not be successful. Okay, so in computer programming too, we need to plan before designing any problem. Okay, students, so they are telling us that whenever there is a problem, we have to always plan before. Okay, without planning, if we go ahead, we may not be successful, right students? So also in computer, so the computer programming too, we need to plan before designing any problem. कोई भी problem को design करने से पहले, कोई भी कैलकुलेशन क्वेरी को डिजाइन करने से पहले हमें हमें क्या करना होगा? उसे प्लान करना होगा। ओके, now algorithm and flow chart are the two basic terms. What are the two basic terms? Algorithm and flow chart, right? So these are the two basic terms which aid for the development of a software package conveniently. और ये किस लिए हमें हेल्पफुल है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर पैकेज कन्वीनियंटली, हमारा जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है उसे कन्वीनियंटली डेवलप करने के लिए कुछ सर्टेन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स की नीड होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज एन एल्गोरिथम? An algorithm is a step-wise set of finite instructions written to solve a problem. अब जो एल्गोरिथम है ये स्टेप वाइज सेट ऑफ फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन कैरी आउट किया जाएगा वो स्टेप वाइज होगा, स्टेप नंबर 1 2 3 4, राइट? And they are written in the step form to solve a problem. It will be easier to code a problem after having a well prepared algorithm. जब तक हमारे पास well prepared एक एल्गोरिथम नहीं होगा तब तक हम एक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एल्गोरिथम हो या फिर इजीली वेल प्लान्ड फ्लो चार्ट हो। एन एल्गोरिथम इज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड मस्ट बी एफिशिएंट एंड लिमिटेड टू द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, हमें ये ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हुए कि जब भी हम हमें बनाते हुए जब भी हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो वो एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और कम से कम स्टेप्स में कवर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, स्टेप सेकंड टू बाय अ ड्रेस फ्रॉम अ गारमेंट शॉप एज फॉलोज। ओके, सो टेक मनी एंड गो टू द गारमेंट शॉप। फर्स्ट स्टेप, व्हाटएवर, अगर आपको कोई ड्रेस खरीदनी है मार्केट से तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? टेक मनी एंड गो टू द गारमेंट शॉप। अपनी मदर से मनी लोगे और गारमेंट शॉप पर चले जाओगे। टेल द शॉपकीपर टू शो यू द ड्रेस। अब आप शॉपकीपर को बोलोगे तो शो मी द ड्रेस। ओके, टेक योर फेवरेट ड्रेस। नाउ यू विल टेक योर फेवरेट ड्रेस। ओके, पे द मनी टू द कैशियर। अब आप पे करेंगे उसका जो भी प्राइस होगा ड्रेस का। टेक द बैलेंस इफ एनी। उसके बाद आप बैलेंस लेंगे, है ना, अगर वो देते हैं, राइट? बैलेंस मतलब बचा हुआ पैसा, राइट? आपने रिटर्न करके जो बचा हुआ पैसा है वो लेंगे, बैलेंस। उसके बाद आप अपना बिल लेंगे। फाइनली यू रिसीव द डिजायर्ड रिजल्ट, द ड्रेस। Similarly, algorithm is performed on our computer system to carry out the basic instructions, right? Now, algorithm to find greatest number out of two numbers. अब मुझे greatest number निकालना है दो नंबर में से, तो सबसे पहले I will put a start. इनपुट टू नंबर्स, कोई भी जिन दो नंबर्स का मुझे जिन दो नंबर्स को कंपेयर करके मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए उनको मैं इनपुट करूंगी। ओके, आई विल इनपुट दोस टू नंबर्स, कंपेयर द टू नंबर्स। इफ ए इज ग्रेटर देन मी देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप as go to the sixth step. Okay, so this is the algorithm for the, so what is the next part is print the result. अब इनमें से जो भी ग्रेटर होगा वो प्रिंट करेंगे रिजल्ट, उसके बाद स्टॉप। अगर बी ग्रेटर है तो उसके बाद स्टॉप होगा, राइट? एल्गोरिथम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। अगर आपको टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट, इनपुट टू नंबर्स, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, print the result, then stop. Okay, algorithm to multiply two numbers. So you, first of all you have to start, input two numbers, multiply the two numbers, print the result, and then stop. So this is how an algorithm works in our computer to carry out any instruction to find a solution to our problem. Okay students, next we have is flow chart. Diagrammatical representation of the algorithm is called flow chart. इसी एल्गोरिथम को अगर मैं डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करूं तो उसे ही हम क्या कह देंगे? फ्लो चार्ट कह देंगे। द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट किसकी फॉर्म में शो है हमें?
फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो हो रहा है, राइट। द फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स, और इस फ्लो चार्ट में वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। यूजिंग फ्लो चार्ट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। अब फ्लो चार्ट का यूज करके आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रोग्राम, ओके। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द स्टेप्स shapes used in the flow chart. So what are these shapes used in the flow chart? So your first shape is start or stop box, that is a oval shape, right? This box is used to start or stop the flow chart. It is represented with an oval. जितना भी अगर आपको फ्लो चार्ट में स्टार्ट करना है कोई भी एल्गोरिथम, राइट, कोई भी इंस्ट्रक्शन को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, उसे प्लान करना पड़ेगा। जब भी आप प्लान करेंगे तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा, और वो स्टार्ट आप कहाँ मेंशन करेंगे? एक ओवल शेप्ड में, राइट। नेक्स्ट, input box. तो input box it to display the input of the flowchart of program parallelogram is used. input box में क्या करेंगे? जो भी आपको input डालना है तो आप पैरेललोग्राम बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग बॉक्स। अब उस इंस्ट्रक्शन पे, उस इनपुट पे आपको क्या प्रोसेसिंग करनी है वो आप लिखेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स में। द प्रोसेसिंग ऑफ द फ्लो चार्ट इज शोन बाय अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। नाउ व्हाट डिजायर्ड आउटपुट यू वांट? द डिजायर्ड आउटपुट द रिप्रेजेंटेड थ्रू अ पैरेललोग्राम। अगेन देखिए, इनपुट एंड आउटपुट आपका हमेशा पैरेललोग्राम में होगा, राइट। Now the decision box. The box is used to represent the decision of any condition that is to be met, and it is represented with the rhombus. Decision box आपको decision देगा, और ये कौन से शेप में होगा? rhombus की शेप में होगा, राइट। Now the flow lines. So these are the flow lines. Arrows are used to join the various boxes. They are used to connect the flow of the flow chart from one step to another. एक स्टेप को दूसरे स्टेप से कनेक्ट करने के लिए हम फ्लो लाइंस का यूज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट। अब हमें कन्वर्जन करना है एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट में। सो एल्गोरिथम क्या होगा? देखो, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू बाय अ ड्रेस फ्रॉम अ गारमेंट शॉप। अब मुझे फिर से वही एग्जांपल देखना है कि आई वांट टू बाय अ ड्रेस फ्रॉम द shop, okay, so again I will take money from my mother and go to the garment shop, then tell the shopkeeper to show you the kind of the dress which you want to buy. Then step 3 will be take your favorite dress, pay the money to the cashier, take the balance if any, and sixth step is take the bill, and finally you receive the desired result, right? And what will be the desired result? That is your dress. And how this problem can be represented in the flow chart we will see here, right? First of all, you will give a start to this plan, okay. Again you have to take money and go to the garment shop. As you can see that there is a box which is in the form of, so this is a input box, and input box is in the form of parallelogram, right? This is the oval shape in which you will give the start or stop instruction. Then in the parallelogram you will give the instructions to take money and go to the garment shop. Next, the rectangular box will show the processing, that is take the tell the shopkeeper to show the kind of the dress which you want. अब यहाँ processing चल रही है, take your favorite dress, pay the money, take the balance, ठीक है, take the bill. So this is the processing which will be shown in the rectangular box. उसके बाद finally you will give the output, that is finally you get the dress, so that dress will be your output, and you will stop the instruction, okay, you will stop the instruction because your problem is now solved, okay students. So next is algorithm and flowchart to find the greatest number out of two numbers. So here similarly you can find the greatest number out of two numbers. Algorithm will be start input two numbers, compare two numbers. If a is greater than b, go to the step c, as go to the step 6. So what is the step 6? That is b is greater, right? Print the result, then stop. Print b is greater, then stop. Flowchart will be start, then we will give the processing input as take two numbers a and b, okay. Decision box is a is greater than b, okay. अगर a greater नहीं है b से तो print b करेंगे आप, right? अगर a greater है b से तो you will give the output as print a, and then finally you will stop the flowchart, right? So this is how you can give the instruction for the in the computer. Algorithm and flowchart to add two numbers. So this is the algorithm to add two numbers. Okay students, now we will directly come to the algorithm, that is about the algorithm and flowchart to multiply two numbers. So start input two numbers, multiply the two numbers, print the result and stop. Similarly in flowchart you can give a start instruction, take two numbers a and b, add these numbers, display the result and stop, okay students. So this is how you can perform the algorithm flowcharts in your computer system. This is how a plan is designed to solve a problem in our computer system, okay students. So now we have completed the explanation and reading part of this chapter. Now we will go through the backup menu, that is the most important points of this chapter. So a very first point is the computer understands the instructions written in a language which are called the program, okay. All the software programs are written in a special language that is known as the computer languages. The program's objective should be determined before writing it. This is known as an algorithm.
Flowchart is a diagrammatical representation of the algorithm. The flowchart represents through various geometrical shapes. Start boxes used to start the flowchart. Input boxes used to display the input of the flowchart. Decision boxes used to display the represent the decision or any condition that is to be met. Flowchart, flow lines are the arrows that are used to join the various boxes. So students, these are the backup menu points of this chapter. Hope you understood this chapter very well, students. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, keep revising, keep learning. Thank you, students. Bye-bye. Take care.